So in today class, we will discuss about the wave velocity and we will go back to the concept of wave packet because wave velocity and wave packet, these two topics we will use in the coming topics, like when we will discuss about the Heisenberg uncertainty principle or Schrödinger wave equation. Our quantum mechanics is totally based on the concept of wave packets, right? So before describing the concept of wave packet, we have to discuss about the concept of wave velocity, right? So what is wave velocity? So wave velocity comes from the concept of de Broglie hypothesis, and all of we know in a de Broglie hypothesis, what was the statement कि suppose you have a particle, अगर आपके पास कोई भी particle है and it is moving with the velocity v, right? Then this particle which is moving with the velocity v, it will associate a wave. It will associate a wave from this moving particle, and that wave is called matter wave, right? तो यही तो था हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कि मूविंग पार्टिकल associate a wave and that wave is called matter wave. Matter wave. And we calculated the wavelength of this matter wave in de Broglie hypothesis, and that was lambda is equal to h upon mv, right? This is the de Broglie hypothesis, and this wavelength is de Broglie wavelength, or you can say wavelength of the matter wave, right? So this concept we already discussed in the de Broglie hypothesis. Now we have to discuss the concept of phase velocity or wave velocity. So wave velocity या phase velocity both are same, and it is denoted by a symbol Vp. V indicates velocity and P indicates in the subscript. Here I use P in the subscript, which indicates phase. So that is a phase velocity, right? So if we want to define the phase velocity, so you will say कि it is the velocity with which this matter wave, because हमारा moving particle ने एक wave associate कर दी है and that wave is matter wave. So this is a velocity by which a monoplane monochromatic wave you can say, or you can use the word matter wave, move inside a medium. जिस velocity से ये matter wave move करेंगी, which are associated from a moving particle, that velocity is called wave velocity, or you can say phase velocity. Wave velocity or phase velocity, right? But you should keep in mind कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट क्या था कि आपका जो मूविंग पार्टिकल है दैट विल एसोसिएट अ सिंगल वेव. यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रही हूँ हम, यहाँ पे आई एम यूजिंग अ वर्ड सिंगल वेव, राइट? व्हाट आई वांट टू से हियर कि आपका जो पार्टिकल है, इफ दैट पार्टिकल इज मूविंग with some velocity v, then a single wave will be associated, not a group of wave. That single wave will be associated, and that single wave having some velocity is called phase velocity. तो उस single wave का जो velocity होगा that is called either phase velocity you can use, or you can use wave velocity, right? So now we will calculate what is the value of this phase velocity or wave velocity. See, what is the mathematical expression for this wave velocity? Means we have to calculate Vp expression. What is the mathematical expression for wave velocity, right? So we will use the concept of de Broglie hypothesis to describe the expression for the phase velocity, and we know there is a wave particle duality. कि आपका
electromagnetic wave, it can behave like a wave, as well it can behave like a particle, right? तो अगर आपके पास कोई भी particle है, suppose you are having a particle, it behaves like a wave. तो उसकी जो energy होगी, that is energy is equal to h mu, because mu is the frequency. ये अगर हमारी एनर्जी है तो दिस इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द वेव, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टर्म आया है, तो यू कैन से दिस इक्वेशन इंडिकेट्स द एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू एनी वेव. एंड इफ आई राइट E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो दिस इक्वेशन कम्स फ्रॉम द आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन. And this indicates the particle nature. This is the energy corresponding to a given particle, because c is the velocity of the light. और अगर यहाँ पे c की जगह you can also use mv square, right? तो अगर हम ये इक्वेशन यूज करें तो this is the energy corresponding to any particle and this is the energy corresponding to any wave, right? And all of we know from the de Broglie hypothesis, it follows the concept of wave particle duality, कि वेव का तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है. तो यू कैन से कि बोथ एनर्जीज आर इक्वल बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पार्टिकल ड्यूलिटी. तो यू कैन से कि आपका जो म्यू का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज mc स्क्वायर बाई h. म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, c is the velocity of the light, h is the Planck's constant, and m is the mass of moving object, right? तो यहां से हमने एक, I am saying this is equation 1. This is equation 1. Now we want to calculate the value of wave velocity or group velocity. So what formula we will use to further solve it? Because this is a wave velocity. ये हमने किसका concept है? This is a wave velocity. हमें wave velocity निकालनी है and all of we know कि आपका जो velocity होता है that is mu into lambda. This expression you know very well. Mu is the frequency, lambda is the wavelength and v is the velocity, right? तो यहाँ पे ये expression हमें पता है, तो you can also write Vp is equal to mu into lambda. And mu का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है, तो Vp is equal to mc square by h into lambda. Right? And lambda using wave particle duality, you know lambda is equal to h upon mv होता है from the wave particle duality. De Broglie hypothesis from this equation comes from the concept of de Broglie hypothesis. So you can say Vp is equal to mc square by h, and here is h by mv. So this term cancelled out from here and you get c square by v. C square by v, which is very important relation. So from here what you get कि जो expression for Vp is equal to c square by v. This is a mathematical expression for the wave velocity. Where Vp is a wave velocity of a wave which is moving in a medium. C is the speed of the light having value 3 into 10 raised to power 8 meter per second, and v is the velocity of that moving object. Because I told you that कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसी से तो हमारी वेव एसोसिएट होगी. दैट इज द de Broglie hypothesis कि a moving object will associate a single wave.
तो हमने यहाँ पे क्या लिया, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट and this is the velocity of the wave which is associated from this moving object. Both velocities are different. This velocity indicates the velocity of moving object जिसकी हेल्प से सिंगल वेव एसोसिएट हो रही है, राइट? और ये हमारी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द मैटर वेव दैट इज एसोसिएटेड विद दिस मूविंग ऑब्जेक्ट। ये हमारी वेव एसोसिएट हुई है, तो किस वेलोसिटी से ये वेव मूव करेगी, दैट इज वीपी। और ये वेव किसकी वजह से एसोसिएट हुई है, इस अगर आपके पास कोई भी पार्टिकल है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी, राइट? तो इस एक्सप्रेशन में कुछ भी नहीं है, जस्ट यू हैव टू इक्वेट टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू अ गिवन वेव एंड एनर्जी फॉर अ गिवन पार्टिकल। तो एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू अ गिवन पार्टिकल इज यूज्ड फ्रॉम द आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, E is equal to mc square, और दूसरा हमारा क्या था, E is equal to h mu, and we equate both kinds of energy, और वहां से हमने फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कैलकुलेट किया and we got this equation, and after that you know very well कि आपका जो velocity का relation in terms of wavelength and frequency ये होता है। तो here we put the value of frequency in this equation and we use concept of de Broglie hypothesis, and at the end we got this result, right? So what are the outcomes of this result? So now we will discuss. Here we get कि आपका जो Vp is equal to c square by v. This is a wave velocity. Instead, you can use single wave velocity too. For your better understanding, you can use a single wave velocity, or you can say phase velocity. Phase velocity, right? But what was the problem in this? There is some problem in this result. And what was the problem in this result? Actually, this result is quite unexpected. What was the unexpectation? Because from Einstein theory of relativity, we know the velocity of light is always greater than the velocity of moving object. This thing we know very well कि अगर आपके पास कोई भी particle that cannot move with velocity greater than the velocity of the light, velocity of light हमेशा greater रहती है than the velocity of the object. So this thing we know very well from the Einstein theory of relativity. तो अगर हम ये टर्म यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे इस रिलेशन में कि c का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन v, तो अगर ये वाली टर्म ग्रेटर देन रहेगी तो यू कैन से c बाई v की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1. तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो vp इज ऑलवेज ग्रेटर देन v. अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी तो व्हाट डज इट मीन कि जो vp है दैट इज wave single wave velocity is always greater than the velocity of the moving object, and this is a wrong statement. What was the problem in this result? If I try to explain this result, तो what does it mean? इस result का क्या मतलब हुआ? Suppose मैंने कोई भी particle लिया and that particle is, this is a particle which is moving with 5 meter per second. इसका velocity मैंने क्या लिया, 5 meter per second. अब इस पार्टिकल से एक सिंगल वेव एसोसिएट हुई. दिस इज अ वेव, सिंगल वेव विच इज एसोसिएटेड फ्रॉम दिस मूविंग पार्टिकल. तो इसका वेलोसिटी व्हाट डज इट मीन, यहाँ से क्या होगा कि इसका वेलोसिटी कुछ 10 मीटर पर सेकेंड होगा. तो इसको अगर आप विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे तो व्हाट डज इट मीन कि आपका पार्टिकल, तो जो वेव उससे एसोसिएट हो रही है वो तो आगे आगे जा रही है, पार्टिकल उसके पीछे पीछे जा रहा है, राइट? जो उसका ओरिजिन है, ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, इस पार्टिकल से, तो ये वेव ओरिजिनेट हुई है, तो पार्टिकल तो पीछे रह गया और वेव बहुत आगे निकल गई है.
राइट। तो वेव आगे जा रही है और पार्टिकल उसके पीछे पीछे जा रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि आपकी जो वेव है वो इसी से एसोसिएट हुई, तो आइडियली इट शुड बी इक्वल। ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, कि जिस मूविंग पार्टिकल से जो हमारी मैटर वेव एसोसिएट हुई है उसका वेलोसिटी दैट शुड बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट, देन ओनली यू विल से कि दिस रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड। ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है, ऐसी हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अगर ये टर्म है तो दिस मीन्स दिस रिजल्ट इज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जहां से हमारी वेव ओरिजिनेट हो रही है वो तो पीछे रह गया और वेव हमारी आगे चली गई है। तो ये रिजल्ट क्या हो गया कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस रिजल्ट, राइट। तो कई बार कॉन्सेप्चुअल में आता है कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन द रिजल्ट ऑफ वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी, so you have to describe this reason. So because of this unexpected result, we move to the concept of group of wave. We move to the concept of group of wave. अभी तक तो हम किसकी बात कर रहे थे, अभी तक तो हम सिंगल वेव की बात कर रहे थे कि हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है तो एक वेव जनरेट हो रही है, दैट इज सिंगल वेव जनरेट हो रही है, राइट। तो अब इससे हमने जो रिजल्ट निकाला वो रिजल्ट क्या आया, रोंग आया, अनएक्सपेक्टेड आया। तो व्हाट वी डिड, वी मॉडिफाइड दिस वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने अपना स्टेटमेंट चेंज किया, एंड व्हाट ही सेड कि आपका अगर सपोज दिस इज अ पार्टिकल, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो इंस्टेड ऑफ अ सिंगल वेव there will be the formation of group of wave. कि this moving particle, this is a moving particle having velocity v, it will associate group of wave instead of a single wave, राइट। अभी तक तो हम क्या बात कर रहे थे कि अगर आपका पार्टिकल मूव करा विद वेलोसिटी v से तो वहां से सिर्फ एक ही वेव एसोसिएट होगी, बट नाउ वी फाउंड दैट कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस रिजल्ट इफ वी यूज दिस फेज वेलोसिटी और कॉन्सेप्ट ऑफ वेव वेलोसिटी, so we got some unexpected result. So right, so de Broglie modified his statement by using concept of group of waves. So what he said, if a particle is moving with velocity v, then it will associate a number of waves. That waves are called group waves, or you can say wave packet. That is called wave packet. Packets of waves. Number of waves will be associated with the moving particle, right? And the velocity with which this group of waves will move is called group velocity. अभी तक तो हमने फेज वेलोसिटी की बात की थी, दैट इज इंडिकेटेड बाय vp. नाउ वी चेंज अवर topic, that we come to the concept of group velocity. So here group velocity, or you can say wave packet velocity. Wave packet velocity, and it is denoted by a symbol v stands for velocity and g stands for group, right? So now we will use the concept of group of waves. तो अभी तक तो हम सिंगल वेव की बात कर रहे थे, नाउ वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप ऑफ वेव्स.
तो उसका जो वेलोसिटी होगा दैट इज vg. So if we want to define what is group velocity, so group velocity means it is a velocity with which a group of wave. This is a velocity with which group of wave will move. This is a velocity with which group of waves inside a medium move is called group velocity. Is called group velocity, or you can say wave packet velocity. Is called group velocity, or you can say wave packet velocity. Right? So actually what will happen here? Suppose we are having a particle and it is moving with velocity v, then a number of wave will be associated, and each these wave have some different, slightly different wavelength and slightly different frequency. कि इसका wavelength कुछ होगा lambda 1, lambda 1 you can see, इसका lambda, then lambda plus delta lambda, lambda plus 2 delta lambda, like this. So you can say कि आपकी जो ये waves associate होंगी, all these waves have slightly different wavelength and frequency. सभी का सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, they will have slightly difference in their wavelength and frequency, right? And what after that what will happen, these waves will superimpose to each other. Superimpose to each other, right? So what will happen if these waves superimpose to each other? So they will form constructive and destructive interference. They will form constructive and destructive interference. They will form constructive and destructive interference. Right? So if we want to draw the superposition of this wave, so how it will be? These waves superimpose and they will form like this. This is a wave packet. इस तरह का हमें एनवलप मिलेगा और इसके अंदर सिंगल वेव रहेगी लाइक दिस. These type of wave envelope we will get, right? तो इसका जो बाउंड्री होगा, ये जो पहले हमने ड्रॉ किया था, दिस बाउंड्री, ये जो इसका बाउंड्री है, this boundary indicates wave packet, wave envelope or wave packet, right? तो इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज ग्रुप वेलोसिटी. जो बाउंड्री है, जो मैंने डार्क हाईलाइट किया है, ओवरराइट किया है, दैट इंडिकेट्स वेव पैकेट एंड दैट विल मूव विद वेलोसिटी vc. और इसके अंदर जो वेव है
that indicates a single wave and that will move with the velocity v. तो what does it mean कि ये जो representation है, it indicates both types of velocity, group velocity as well phase velocity. तो इसका जो ये outer boundary है, that indicates the velocity of the group of waves, that is wave packet velocity vg. और जो इसके अंदर जो मूव कर रही है inside, that indicates phase velocity, right? So now we will calculate what will be the expression for group velocity. अभी तक हमने निकाला expression for the phase velocity. Now we will calculate, we will derive expression for the group velocity, right? So to derive the expression for the group velocity, we will consider two waves, because when a particle is moving, a number of waves will be generated, associate होंगे. But to derive this expression, for our simplicity, I will take only two waves and they will superimpose to each other and to form a wave packet. You can take any number of waves. आप 3 waves को भी superimpose करवा सकते हो, 4 waves को भी superimpose करवा सकते हो. But to derive this expression, I am taking a two waves. And they will superimpose to each other to form a wave packet, right? So first we will define wave 1 and this is wave 2. This is a displacement for the wave 1 and this is a displacement for the wave 2. And all of you know how we can represent a plane monochromatic wave. Y is equal to A sine omega t. This is the representation of a plane monochromatic wave, where y is the displacement, a is the amplitude, sinusoidal होती है wave, omega is the angular frequency, right? So this is a representation of a plane monochromatic wave. तो यहाँ पे आपका जो y1 होगा, that will be amplitude मैं दोनों का same रख रही हूँ, sin angular frequency omega 1t, because I told you that कि आपकी जो wave associate होंगी, they will have slightly different wavelength as well different frequency. तो उसका frequency मैंने क्या लिया, ओमेगा 1t, और जो सेकंड वेव है एम्पलीट्यूड दोनों का मैंने सेम रखा है, ओमेगा 2t. Omega 1 is the angular frequency for wave 1 and omega 2 is the angular frequency for the wave second, right? And here I am introducing one more term, kx, k1x minus k2x. What is k here? यहाँ पे ओमेगा is the angular frequency and you know omega क्या होता है, that is 2 pi mu. 2 pi mu. And what is k here? K is a wave vector. K is a wave vector. And what is value of k? K is equal to 2 pi by lambda. K is equal to 2 pi by lambda. Means k depends upon the value of lambda. And I told you that ki lambda will be slightly different for all kinds of waves that are associated from moving object. तो पहली जो वेव है उसका मैंने वेव वेक्टर क्या माना, k1, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द लैम्डा. और जो सेकेंड वेव है उसका मैंने वेव वेक्टर क्या माना, k2, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द लैम्डा. तो पहली वेव की वेवलेंथ लैम्डा 1 है तो उसका वेव वेक्टर k1 हो जाएगा, और दूसरी वेव का जो वेवलेंथ लैम्डा 2 है, देन इट विल हैव वेव वेक्टर k2, right? So I am saying this is equation number 1 and this is equation number 2.
So these waves superimpose to each other. So we have to calculate its resultant displacement. Resultant displacement. Right? ये दोनों superimpose करेंगी, then it will form a wave packet. तो सुपरइम्पोजिशन होगा तो कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव होगा. तो फॉर सुपरइम्पोजिशन वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया. नाउ वी विल सोल्व इट फर्दर by applying the formula of sin C plus sin D.